ऐसा हमारा जुलाई को पढ़ा था व्यूअर्स क्या आ रहे हैं। अच्छा सर अब हम उसी सवाल का क्या करने जा रहे हैं, परचेजेस वाला आइडिया सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वही कंट्रोल अकाउंट से। कंट्रोल अकाउंट में जो बैलेंस आएगा वो उससे क्या करेगा, रिकंसाइल करेगा, और रिकंसाइल होने का मतलब है कि हमारा आंसर प्रॉपर सही आएगा। मैंने नहीं लिखा। अच्छा वैसे बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री नंबर 6 मिस्टर अर्शद परचेज पे इधर से सॉरी टोटल से कर देना। The purchase is debit, accounts payable credit. Purchase is debt. वजह बनी 36,080 रुपये। ये होगी पहली एंट्री। परचेज रिटर्न की एंट्री करें। तो परचेज रिटर्न की एंट्री है 2920। इधर आप लिखेंगे परचेजेस रिटर्न 2920 एंड देन फिर हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। सर बड़ी अमाउंट से क्लोज होता है। बैलेंस 36160। सॉरी प्रॉफिट इसी तरीके से सर ये पूरी अमाउंट से क्लोज होगा। इसमें कोई शको शबा नहीं। सेम ये भी अपनी पूरी अमाउंट से क्लोज होगा। तो सर ये वाला काम तो हो गया निपट। अब हमें ये वाला सोल्व करके हमारा क्लोजिंग बैलेंस करना है। अब आते हैं इंडिविजुअल वन बाय वन। कितने बस सप्लायर्स थे हमारे? 4 थे, अर्शद, असलम, आदिल, मुमताज। ठीक है, अब छठी वाली ट्रांजैक्शन हुई है किसके साथ? अर्शद के साथ 4160। छठी ट्रांजैक्शन वजह क्या थी? सर परचेजेस पीछे उसमें एस से था क्या पीछे। अच्छा डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस नहीं सर, डेबिट दिए क्रेडिट बैलेंस होगा 4160 बैलेंस दिए। ओके सातवीं ट्रांजैक्शन है मिस्टर असलम परचेजेस पीछे क्रेडिट बैलेंस बिकॉज़ इट इज आवर लायबिलिटी। ओके इसी तरीके से आठवीं आपकी नवी ट्रांजैक्शन थी मिस्टर अर्शद की, जिसमें 260 रुपए का माल किया गया था, वो माइनस कर रहा था। परचेज रिटर्न ERJ कितने हमारा रिटर्न आया? 260 तो माइनस कर ठीक है। इसी तरीके से 10 ट्रांजैक्शन है परचेजेस परचेज जर्नल कितना? 15,160। अच्छा 11वीं ट्रांजैक्शन भी अलग होती है लेकिन रजिस्टर डिफरेंट है। परचेजेस रिटर्न ERJ कितना? 1160।
14 इसका रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है भाई, आगे बढ़े। इसी तरीके से 12 ट्रांजैक्शन आपके काम के लिए है, 13 भी काम के लिए, 14 है कल मेरे पास 14 ट्रांजैक्शन। परचेज जर्नल है पीजे, हाउ मच अमाउंट 10,600 and 15 ट्रांजैक्शन अलमुमताज 1500। रजिस्टर कौन सा है? परचेजेस रिटर्न PRJ। तो 9,100 रुपये का इसमें सर्टिफाइड ट्रांजैक्शन कौन होगी? यस। अब हमने इनके बैलेंसेस को इधर इकट्ठे करते हैं। तो कितने कस्टमर्स थे, सप्लायर्स थे मेरे पास? 4, 1 2 3 4। अर्शद, असलम, अलाबिद, अलमुमताज। सो इसका बैलेंस है 3900 6160 14,000 9,001। आंसर टोटल ले लीजिए। सारी ट्रांजैक्शन ले रही हूँ। टू 60 1160 1500। $36,080 minus 29। दो मिनट देख लीजिए कैसे रखी होगी हमसे। हमने बैलेंस से सही नहीं दिया। 33,160। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आ रहा है? 33,160। सर देखें आप उनकी रिएक्शन में तो आगे इजी हो, लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा स्पीड पे जा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। मैंने मिसाल के तौर पे इसको माइनस करना चाहिए था। तो सर जितना हमारा पेट्रोल अकाउंट का पेबल का आ रहा है उतना ही किसका आ रहा है? अकाउंट पेबल शेड्यूल का दिखा रहा है। तो सर इधर आपका स्पेशल जर्नल कंप्लीटली लोग आपके सेल्स के साथ जुड़ा है। तो वालेकुम अस्सलाम।